Hello students, this is Bharat Bhushan, Assistant Professor of Computer Science, Government National College, Sirsa. Welcome to our next video of C programming. In the last lecture, we studied about tokens. Tokens in C, like constants, variables, operators, special symbols, etc. In this video, we will study about casting, input and output from the keyboard on the screen output, and we will come to know some multiple choice questions. We will come to know about how to write our first C program. In the previous lecture, we studied about operators in C. Let's have a look. We studied quinary operator, binary operator like arithmetic operator, relational operator, logical operator, bitwise operator, assignment operator. In the next videos, we will study about ternary operator or conditional operator. Our next topic is casting. What is casting? Let us suppose we have an expression 5 by 9 multiplied by f minus 32. It is a formula to convert Fahrenheit to centigrade value. Here we have 5 by 9. In the last lecture we studied that integer by integer gives result as an integer. So 5 by 9 will always be 0. The output will be 0. So temperature in centigrade will always be 0. How to correct the result? In order to correct the result, we will have to write 5.0 by 9.0. So we will get correct result. If we say 5.0 by 9, then compiler will automatically convert the value to float. This is called automatic typecasting. On the other hand, if we force any variable to convert to another type, that is called explicit typecasting. For example, we want to convert 5 to float, so we will write float 5. This expression will convert integer 5 to float, that is 5.0. Then we can divide it by 9. So we are converting 5 forcefully to float value. This is called explicit type. Character and short operands are converted to int. Lower data types are converted to the higher data types, and result is of higher data type. Convergence between unsigned and signed types may not yield intuitive results. For example, if I have variables f, d, l, I and s of different types of float, double, long, int and short respectively, then d plus f, d is double, f is float, it will give f will be converted to double because f is of shorter type, lower type. Similarly, I by s, s will be converted to int. L by I is converted to long. These are the characteristics of automatic typecasting. Here is the hierarchy of typecasting. We have on the top double, then float, then long, then int, then short and character. If we want to convert any variable to another type forcefully, then we say it is explicit typecasting. In order to perform typecasting, the syntax is type name, in which we want to convert the type, then the expression whose value is to be converted to some another type. For example, as we have studied, float 5 by 9 into f by 32. 5 will be converted to float.
there are some values, or we can say there are some truncations if we convert one value to another value. For example, float to int. Conversion causes truncation of fractional part. Integer float to int 5.9 to int 5. The fractional part is truncated. Similarly, double to float, higher to lower. Conversion causes rounding of digits. Long int to int, higher value to lower value causes dropping of the higher order bits. So there is a loss of value if we convert a higher value to a lower value. That is always a loss of value. Now, how to declare a variable in a C program? The variable we use in a C program must be declared. The syntax for declaring a statement is, we have data type space list of variables separated by commas, then semicolon. Semicolon is termination of the statement of declaration. Declaration announces that the data type of a variable and allocates appropriate memory location. If there is no initial value, the value is initialized as per the storage class of the variable. It is possible to assign an initial value to a variable in the declaration itself. We can declare a variable, we can initialize a variable. For declaring a variable, we have data type space list of variables separated by commas. If we want to initialize a value, we have data type space variable equal to expression or value to initialize any variable. For example, code is a variable, or we can say an identifier of the type character. I, an identifier or a variable of the type int. National underscore dept of the type long, pay rate of the type float, pi of the type double. We can initialize all these variables declared previously. Code is initialized a value of b, I is given a value of 14, pay rate is given a value of 14.25, pi is given a value of 3.141592656 of the type double. Now, how to input the value from the keyboard and how to give the result on the screen. हमें इनपुट कैसे लेनी है और आउटपुट स्क्रीन पर कैसे शो करनी है। सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए हम स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज़ करते हैं, जो कि हैं हमारे पास scanf और printf. Scanf is one of the commonly used function to take input from the user. This function reads formatted input from the standard input such as keyboard. Printf is one of the commonly used function to display the output on the screen or the monitor. These functions are inbuilt functions and are defined in the header file stdio.h, standard input output header file. All syntax in C language, including printf and scanf functions, are case sensitive. As we discussed in the previous video, that C language is case sensitive. So while declaring a variable, while making identifiers, we must take care of
case sensitivity, and we must take care of reserved words. All reserved words are in lowercase. Printf. Printf is predefined function in stdio.h header file. Using this function, we can print the data or user-defined message on the monitor screen. If we want to display only message, then we will use the syntax printf user-defined message in double quotes, then end of the statement. If we want to print the message with some values, then we will use the second syntax printf format specifiers or user-defined message in double quotes, comma, variable 1, comma, variable 2, comma, variable 3, and so on. Then semicolon at the end to terminate printf statement. For example, if we want to print a message, we use first syntax, but if we want to use text with the value, then we use second one. In the second one, we have some format specifiers. फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो कंपाइलर को बताएगा कि हमने किस टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करना है, हमने वेरिएबल का टाइप क्या लिया हुआ है, हम उसको किस टाइप में प्रिंट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, कास्टिंग की है या कन्वर्जन किया है, आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए हमें. Format specifier for different data type is given in this table. For example, we use %d for integer type, %f for float type, %c for character type. For unsigned integer, we have %u. For signed character, unsigned character, we have %c. For long double, we have %lf, etc. For basic data type, we have integer, character and float, %d, %c and %f. Now let us have some examples. Printf, hello, welcome to C program. Here we have text hello, comma, welcome to C program. It is a text between double quotes. Output of this printf will be hello, welcome to C program, because it is a text only. Let us have another example. Integer num assigned a value of 10, temp assigned a value of 20. Initial value of temp and 20 is num and temp is 10 and 20. We have printf %d, comma, num, comma, temp. Here we have two format specifiers, %d and then two variables. First %d for variable num, second %d for variable temp. When first %d encountered, it will jump to variable num and the value of num is printed. Value is 10. Then second %d is encountered, it will jump to the variable temp and the value 20 is printed on the screen. Between 10 and 20 there is space. This space is due to the space given between the two format specifiers, as you can see on the video. For another example, we have num is a value of 10. Printf square of %d is equal to %d. Here we have text as well as format specifiers. We have two format specifier in double quotes and two variables, again num and num star num.
we can write a variable or we can write an expression separating with comma. In this case, when first percentage d is encountered, it will jump to first variable num. The value of num is printed. So we have square of percentage d means square of value of num. Square of 10 is equal to percentage d means num star num. Here the value is calculated. It is 10 into 10, 100, and this value is printed using printf percentage d second format specifier. So we can have simple text, we can print only values, or we can print values with text using printf statement. Now we'll come to know about scanf. Scanf is also a predefined function in stdio.h header file. It can be used to read the input value from the keyboard. The syntax for scanf is scanf function, format specifiers, then list of variables separated by commas and preceded by reference operator AND. This AND is a reference operator. It is a unary operator which gives the address of the variable. It returns the address of the variable. For example, we have two variables, a as int and b as float. If we want to read these two variables, we will write scanf. A is of type integer, b is of type float. So we have percentage d and percentage f as format specifiers for int and float. Then we write list of variables separated by commas a and b preceded by ampersand, that is reference operator. So we have ampersand a comma ampersand b. In this example, we are able to read two input values, both int and float values, and these values are stored in variable a and variable b respectively. Now an example, like we have a variable a and a variable b of the type int and float respectively. We write enter integer and then a float. First we need an integer, then a float. So we write scanf percentage d percentage f ampersand a comma ampersand b. अब हमें इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट देना है, स्क्रीन पर शो करना है, तो हम लिखेंगे printf you entered percentage d and percentage f comma a comma b. Percentage d means value of a, percentage f means value of b. हमने जो वैल्यू एंटर की स्कैनफ से वो वैल्यू प्रिंटफ से हम आउटपुट शो करेंगे. सो वी विल हैव आउटपुट एंटर इंटीजर एंड देन ए फ्लोट, जैसा कि हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है. दूसरी प्रिंटफ स्टेटमेंट से हमने जो वैल्यू एंटर की अब वो वैल्यू हमें मिल जाएगी. वी एंटर्ड -3 एंटर 3.4, so we get you entered -3 and 3.400000. अब हमने वैल्यू एंटर की 3.4, लेकिन हमें मिली 3.400000, because in case of float we get 6 digits after decimal point, so we had 4.400000.
नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर क्या है, हम सी प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, उसके बाद हमारे पास आएंगे ग्लोबल वेरिएबल्स, उसके बाद हमारे पास आएगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, ए फंक्शन हैज़ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड ए फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू। मेन भी एक फंक्शन है, इसके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए तो हम इसको लिखेंगे void। मेन कैन रिटर्न ए वैल्यू, मेन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है या कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इफ वी राइट इंट मेन मीन्स मेन will return of the type integer, then we'll have to write at the end return 0 because it will return nothing, so we can write return 0. If we write void, there is no need to write return 0. In the main function, on the very beginning, we will declare or initialize all the local variables. We have local variables inside the main. We can declare global variables also. These global variables can be used inside the main function. The scope of global variables lies inside the main function and outside the main function, but the scope of local variables lies only within the main function. Then main is closed. We can use user defined functions as and when required after the main function. For example, हमारा पहला प्रोग्राम सी के अंदर हम कैसे लिखेंगे। टॉप में हमारे पास आएगा हेडर फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसको हम कहते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल हमने यूज़ करनी है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि हमारे प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को कंटेन करती है। फॉर एग्जांपल printf और scanf. वी हैव इंट मेन void। हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, हमें एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड, सो हम लिखेंगे printf hello world /n। /n रिप्रेजेंट करता है एस्केप सीक्वेंस को। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। हमारे पास बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस हैं, /t फॉर टैब एक्सेट्रा। हमने मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर दिया है, इसलिए हम लिखेंगे रिटर्न 0 और हम मेन को क्लोज कर देंगे। हमारा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आएगा हेलो वर्ल्ड जब हम इसको कंपाइल करेंगे हमारे प्रोग्राम को। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स देना चाहते हैं तो हमारे पास कमेंट्स देने के 3 तरीके हैं। पहला है कंप्लीट लाइन कमेंट, दूसरा है पार्शियल लाइन कमेंट और तीसरा है ब्लॉक कमेंट। अगर हमें कंप्लीट लाइन कमेंट देना है तो हम स्टार्टिंग में // लिखेंगे और उसके बाद हम अपना कमेंट लिखेंगे। अगर हमने पार्शियल लाइन कमेंट देना है तो हम अपना पहला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट एंड होने के बाद हम अपना कमेंट दे सकते हैं यूजिंग //। अगर हमने पूरा ब्लॉक देना है कमेंट का तो हम उसको शुरू करेंगे \* देन ब्लॉक जिसको हम कमेंट देना चाहते हैं, देन एट द एंड *\. तो हम 3 तरीके से हम अपने कमेंट्स प्रोग्राम के अंदर दे सकते हैं। कमेंट्स एग्जीक्यूटेबल नहीं है, आउटपुट में हमें स्क्रीन पर ये शो नहीं होंगे। एस्केप सीक्वेंस, जैसा कि हमने पढ़ा कि एस्केप सीक्वेंस
कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंट नहीं होते, लेकिन इनका काम कुछ अलग है. समटाइम इट इज नेसेसरी टू यूज कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी टाइप्ड और हैज स्पेशल मीनिंग इन सी प्रोग्रामिंग. फॉर एग्जाम्पल, न्यू लाइन, टैब, question mark, etc. In order to use these characters, escape sequence is used. For example, \n, it is used for new line. हम printf के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, अगली लाइन पर जाना चाहते हैं तो हम \n का यूज़ करेंगे. मीन्स जैसे ही \n आएगा, इट मीन्स escape sequence. बैकस्लैश मीन्स एस्केप सीक्वेंस इज स्टार्टेड. वो करेक्टर क्या है, क्या काम करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. \n मीन्स n फॉर न्यू लाइन, हम अगली लाइन पर जंप कर जाएंगे. /b बैकस्पेस, /f फॉर्म फीड, /n न्यू लाइन, /t हॉरिजॉन्टल टैब, /v वर्टिकल टैब, एक्सेट्रा. नाउ हम एक प्रोग्राम को स्टडी करेंगे, प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स. सबसे पहले हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include stdio.h हेडर फाइल, void main, जहाँ हमने इंटीजर यूज़ नहीं किया, हमने void यूज़ किया है मेन के साथ. कोई आर्गुमेंट नहीं है तो हम मेन फंक्शन के अंदर वर्ड लिख भी सकते हैं, उसको ओमिट भी कर सकते हैं. मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारी लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशंस, इंट num1, num2, num3 एंड सम, 3 वेरिएबल हैं. और चौथा रिजल्ट के लिए हमने 3 वेरिएबल्स को इनपुट किया, %d, 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 %num, %num2, %num3. इस स्टेटमेंट से स्कैनअप से हमें तीनों वेरिएबल्स मिल गए और जिनकी वैल्यू हमारे पास हमें इनमें स्टोर हो गई है. हमने इनको अब ऐड करना है. हमने ऐड करना है तो हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन तीनों को जोड़ने के लिए num1 + num2 + num3 result is stored into variable sum. Then we can write the result using printf statement. End of the main output will be enter 3 variables. हम scanf की हेल्प से 3 वेरिएबल्स को एंटर करेंगे, वो सम होगा, हम उसको printf की हेल्प से आउटपुट में ले लेंगे. इसी तरीके से हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स और रेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया है. मान लीजिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c, और तीनों की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया 5, 5 और 10 से. वी हैव अनदर वेरिएबल रिजल्ट. अगर मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू a = b एंड c > b, इसमें हमने a = b इज फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है, c > b अगेन ए रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल्स b एक रिलेशनल ऑपरेटर है, a = b, 5 = 5, yes, output is 1, true, and c > b, 10 > 5, true. So output of AND operator will be true, means 1. So printf a = b and c > b is %d/n result. Output will be 1. Similarly, we can find out the results for other expressions also. Now, based on our this lecture and the previous lecture, we have some multiple choice questions. Our first question is identify wrong keywords of C given below. Second question is types of integers are short, int, long
or all of the above. Question third is signed and unsigned representation is available for short, int, long character. Second option float, double, long, double. Third option A and B. Fourth option none of the above. Fourth question is range of signed character and unsigned character are -128 to +127, 0 to 255, 0 to 255, -128 to +127, -128 to -1, 0 to +127, 0 to +127, -128 to -1. Next question is size of float, double and long double in bytes are 4, 8, 16, 4, 8, 10, 2, 4, 6, 4, 6, 8. Next question is correct way of commenting a single line is \* printf, double \printf, \printf ended with */printf. Next question is an identifier may contain letters A to Z, capital A to Z in basic character set, Unicode alphabet characters other languages, underscore symbol, numbers 0 to 9, Unicode numbers in other languages, or all of the above. Next question is each statement in a C program should end with a semicolon, a colon, a period, or none of the above. Next question is choose the right statement. Int main float C equal to 3.5 plus 4.5, printf %C, C, return 0. Options are 8.0, 8.000000, 8 or 7. Last question is what is the output of a C program? Int main float A 10.0, A is equal to int A percentage or modulus operator 3, printf %F A, return 0. Output of this code is 0, 1, 1.000000 or a compilation error. So thank you very much students. If you have any query you can write in the comment box. You will be given the suggestions. You can message me. Thank you very much.